Right, so ionization energy, right? Let's talk about these. So, ionization energy, right? What is an ionization energy? Let's look into this. So basically, the ionization energy is basically, let's say you have an atom over here. I'm just gonna draw this atom real quick, and you have an electron, right? So you have an atom and you have an electron. Now, basically, you're gonna try, and what you're gonna do is you're gonna want to pull this electron out, right? So you're gonna want to pull this electron out. Basically, when you pull it, you're gonna have it over here. So basically, essentially, what ionization energy is it's basically the amount of energy that is going to be required to pull this electron out. And so this is the amount of energy, right? This is the amount of energy which is called the ionization energy. Now you may ask, okay, well we're pulling out an electron, फिर इसको ionization क्यों कह रहे हैं? Well, because if you look at it in a way, तो ये जो आपका atom है ना, this is gonna become +1, ठीक है? This is gonna become +1 or 1 plus, I don't know what to call it, right? क्योंकि आपने इसके साथ ये जो electron है ना, ये बाहर निकाल दिया, ठीक है? So now you can see this has turned into an ion, which is why it's called the ionization energy, because you're essentially what you're doing is you're turning an atom into an ion. So basically ये energy है क्या? This is basically the energy that you are requiring, that is required to pull out an electron. And अब इसकी proper definition क्या है? See, this was just a concept. What I want you guys to know over here is I want you guys to understand कि देखो ये जो amount of energy है ना, ये बहुत कम होएगी, बहुत थोड़ी होएगी. क्यों? क्योंकि आप एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो. तो that isn't that much energy, you know. इसकी वैल्यू इतनी छोटी होएगी, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज अगर इसकी वैल्यू 0.00000000 समथिंग हुई, तो you cannot just put this into equations. ठीक है, this number is gonna make life hell for you. तो इंस्टेड एक बेहतर डेफिनेशन इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या निकाली, उन्होंने कहा ओके लेट्स नॉट डू दिस. इंस्टेड यहाँ एक एटम लेने के बजाय ना लेट्स टेक 1 mole of these atoms, ठीक है? And then what we do is we turn those into 1 mole of ions plus 1 mole of electrons. और क्योंकि एक मोल में हमें पता है कि हमारे पास 6.02 times 10 raised to the power 23 atoms होते हैं. तो ऑब्वियसली इतने सारे एटम्स में से जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो आपकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी टोटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी that is actually going to be pretty big, ठीक है, and big enough for you to do math on it, right? तो basically इसकी proper definition क्या है? Let's look at that. इसकी जो proper definition है ना, that's basically I'm just gonna like write this over here, ठीक है? Ionization energy is basically the energy required, right? The energy required to remove, ठीक है? जो अभी जो चीज़ें मैं रेड में लिखूंगा ना, those are very important, ठीक है? Energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms and turning them into let's just I don't know what to use, what word choice to use over here, so I'm just gonna say this in order to turn them into 1 mole of gaseous
1 positive ions. ठीक है, these things are really important. एंड इस डेफिनेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी अगर आप अपनी बुक से पढ़ें या टीचर से पढ़ें, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम. ठीक है, अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि व्हाट इज द थिंग gaseous atom gaseous atoms have to do over here. ठीक है, ये gaseous इस बात का क्या मतलब है? Well, basically let's suppose you're trying to remove sodium को ले लेते हैं. सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. Right, let's say you're trying to remove this electron. ठीक है, अब आप ये जो एक एटम है ना, अकेला एटम exists in a gaseous state. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अकेले 1 मोल लो अकेले एटम्स का. अब उस बात का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक मेटल वायर है, तो उसमें जो 1 मोल ऑफ सोडियम्स होंगे ना, दे विल बेसिकली बी इन ए सॉलिड फॉर्म. ठीक है, एक मेटल के अंदर, क्योंकि वो आयंस बने हुए होंगे और उन्होंने मेटालिक बॉन्डिंग की होगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ठीक है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, सो दे विल बेसिकली बी इन द सॉलिड स्टेट, बट वी डोंट वांट देम इन द सॉलिड स्टेट. तो हम क्या करेंगे, हम इनको बेसिकली इस वायर के अंदर से फ्री करवाएंगे, इनको अकेले अकेले लेंगे एंड देन विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि हम इनको अकेले अकेले ले रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड गैसियस एटम्स. ठीक है, वी वांट देम इन द गैसियस स्टेट, तो दैट्स द रूल. ठीक है, दे हैव टू बी गैसियस. This is the definition. आपके जो keywords हैं, those are really important. They're basically 1 mole, ठीक है, 1 mole, and then they're gaseous, and then they are 1 positive ions. All of these things are really important. Anyways, let's look at this. See, this is called the first ionization energy more specifically. And why is it called the first ionization energy? Is कि basically आप जो है ना वो अपना first electron remove करते हैं. ठीक है, you remove your first electron, and फिर when you remove your second electron, it's going to be the second ionization energy, and hence when you remove your third electron, it's going to be the third ionization energy. And each time there's going to be a change. और वो change क्या होगा कि let's suppose आपने पहले अपने सोडियम में से जो था वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. ठीक है, लेट्स से यू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव. ठीक है, और सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, और अब अगर इसका नया आउटर शेल देखें तो दैट इज गोना बी फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट्स गोना बी फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि हम अभी इसके जो थे वो आउटर शेल के ऊपर थे, और जब हमने ये इसके अंदर एक और शेल है. ठीक है, और जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो जो अंदर वाला शेल था वो बेसिकली अब आउटर शेल बन जाएगा. ठीक है, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड ओवर देयर. तो दिस इज बेसिकली गोना बी an ion. ठीक है, one positive ion, and then let's suppose कि आपने इस one positive ion के अंदर से now you remove an electron. ठीक है, this is already positive क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, and then you remove another electron. ठीक है, let's say you remove this one. So what's gonna happen now? It's gonna become an ion that's gonna be 2 positive, right? And then you're basically removing uh, an electron from a 2 positive ion to make a 3 positive ion. और शुरू में क्या था, शुरू में this was an atom. ठीक है, तो first ionization energy basically एक atom की होती है, and then the following ones are basically of ions. So what would become different if I would let's suppose अगर मैं second ionization energy की बात करूँ तो different क्या होगा. Let's say I talk directly about fifth ionization energy. So उसकी definition आपसे अगर पूछ ली गई तो all you have to do is go over here. Okay, it is that, right, gaseous 4 positive ions in order to turn them into gaseous 5 positive ions. ठीक है, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पर क्या किया. ठीक है, बेसिकली फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इट्स व्हेन यू आर गोना बी रिमूविंग द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन. तो लेट्स सपोज कि अगर आपने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एक्स ओवर हियर. ठीक है,
x के पास यहाँ पर थे और बेसिकली आसान लफ्ज़ों में, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द ड्राइंग, बेसिकली आसान लफ्ज़ों में अगर आपके पास 4 पॉजिटिव होएगा क्योंकि आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल लिए होंगे, तभी आप 5th आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर आए हैं। तो अब उस 4 पॉजिटिव आयन में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो अब इट्स गोना बी 5 पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज़ द 5th इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली दिस इज़ गोना बी द 5th ionization energy, ठीक है, and this is going to become 5 positive, and that's why it's going to be 5 positive gaseous ions. Okay, so let's say if I just take 7th over here, or let's say I take 10th over here. तो 10th में बेसिकली मतलब क्या है? 10th का मतलब ये है कि 10th आपने 10th इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो लेट्स सपोज अगर आपने अपना 10th इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो आपने 9 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रिमूव करवाए हुए हैं, and that's going to cause a 9 positive charge, and now you're going to remove your 10th electron, and so you're going to get your 10 positive ion, ठीक है। So that's why if I go into the definition, all that's going to change is it's going to be 9 positive over here, it's going to be 10 positive over here. So I hope you understand the idea here. It's not too difficult, it's not too tricky. And इसके साथ I want you guys to know कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि the successive ionization energies क्या है, या इसका क्या मतलब है successive ionization energy। और इसका basically मतलब ये है कि let's say मैंने आपको first ionization energy बता दिया, ठीक है, first ionization energy से it's equal to x kilojoules per mole, ठीक है। तो अब इसके बाद वाली जो भी आएंगी ना, like the second one, the third one, the fourth one, the fifth one, वो सारी क्या होंगी? वो सारी successive होंगी, ठीक है। तो बाद में आने वाली का बेसिकली नाम जो है वो सक्सेसिव होता है। तो ये सारी जो हैं ये सक्सेसिव आएंगी। सक्सेसिव मतलब जो इसके 1 के बाद आएंगी। एंड सो अगर हमारे पास 3 होता तो 3 के बाद जो 4th होती, जो 5th होती, जो 6th होती, जो 7th होती, वो बेसिकली सक्सेसिव होती, क्योंकि दे आर सक्सीडिंग 3 के बाद आ रही हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस।